Dear students, as you have learned in one of the sessions that how to define the variables and how to enter the data onto those variables so that you can make use of SPSS to apply the chi-square goodness of fit test. Now, I will be giving you the demonstration onto SPSS that how and what type of steps you will be using under SPSS, the set of commands you will be using to test the chi-square goodness of fit test onto certain data set. So students, for this purpose, I have taken the same problem of dice rolling. Suppose the dice is rolled 30 times and the upper face of the dice is observed. The observations are given as upper face variable and the frequency variable. We are required to test at 5% level of significance that the proportion of 6 faces of the dice is same. Now, in order to follow this problem, we have already learned that how to enter the data under certain variables. So students, आज मैं वो आपको set of commands सिखाऊंगी SPSS में जिनको यूज करके आप chi-square goodness of fit test के results ले सकते हैं. So students, सबसे पहले once you will open up the SPSS, आपके सामने एक विंडो अपीयर होगी जिसके बॉटम लेफ्ट पे आपको डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू नजर आ रहे होंगे. So you have already entered the two variables. One is the dice upper face and the second variable was frequency. आप उनको डिफाइन करने के बाद उनमें डेटा एंट्री कर चुके हैं. उसके बाद you will be clicking on to the data option और डेटा ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद you will be choosing the last option, weight cases. Now students, as you know that we have defined two variables. एक वेरिएबल था आपके पास upper faces of the dice and the second variable was the frequency. So you would have to instruct the SPSS that frequency is simply a weight. So in order to define that, हमने ये set of commands choose की हैं. इसके बाद स्टूडेंट्स, आपके पास ये एक विंडो अपीयर होगी. इस विंडो में आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है आपका वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, एक तो डाइस अपर फेस और सेकंड वेरिएबल यहाँ पे अपीयर हो रहा होगा frequency. Now frequency is the variable that contains the weights. So students, by default जो इसकी ऑप्शन होती है do not weight cases. यहाँ पे आपका कर्सर होता है. You would have to move your cursor to the weight cases by. और इसको सिलेक्ट जब आप करेंगे तो यहाँ पे ये विंडो, ये एक डायलॉग बॉक्स आपके पास अपीयर होगा. आपने फ्रीक्वेंसी को यहाँ से उठाना है और इस एरो को यूज करते हुए राइट पे ले आना है. एंड देन यू विल हैव टू प्रेस द ओके बटन. By this way, the frequencies would be taken as weights. Once you are done with that, now we are in the position to apply the chi-square goodness of fit test. So students, the set of commands for that are that you would have to click onto the analyze, then further you will have to click onto the non-parametrics test, further you will be clicking onto the legacy dialogues, and finally from that drop down list you will be choosing the chi-square test. So students, जब आप ये क्लिक कर लेंगे, तमाम कमांड्स को फॉलो करेंगे तो आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स, एक विंडो, स्मॉलर विंडो अपीयर होगी. अब इसमें देखिए लेफ्ट साइड पे आपके दोनों वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं, डाइस अपर फेसेस along with their frequencies or weights. Now students, what you are supposed to do, आपने इसमें से डाइस अपर फेस को मूव करना है to the right hand side under test variable list. Either you can drag it या फिर आप इस बटन को एरो के यूज करेंगे और आप इसको राइट साइड पे मूव करके लेके आएंगे. सो स्टूडेंट्स, ये देखिए ये मैंने किया, मैंने इसको राइट साइड पे मूव किया यूजिंग दिस एरो बटन एंड देन फाइनली आई विल बी, अगर आप ये देखिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के अंडर आई एम अस्यूमिंग दैट ऑल कैटेगरीज आर इक्वल. अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन या स्टेटमेंट आती है जिसमें कैटेगरीज आर नॉट सेम, देन आप दूसरी ऑप्शन को चूज करेंगे वैल्यूज और यहां जाके आप हर कैटेगरी की जो प्रोबेबिलिटी है उसको इंडिविजुअली एंटर करेंगे. बट राइट नाउ वी आर अस्यूमिंग दैट ऑल कैटेगरीज आर सेम. वंस वी आर डन विद दैट, यू विल बी क्लिकिंग ऑन टू द ओके बटन. सो दैट कंप्लीट्स द प्रोसीजर ऑफ chi-square goodness of fit test under SPSS.